हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज DMARDS, disease modifying एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, एंड सेकेंड इज एडजुवेंट ड्रग्स। एडजुवेंट ड्रग्स में हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आता है, जिसमें पेडनिसोलोन एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। एंड DMARDS, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स एज वेल एज बायोलॉजिकल एजेंट। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स के अंदर सबसे पहले हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स आता है, जिसमें हमारा साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रेक्सेट एंड एजिथियोप्राइन आता है। सेकेंड इज सल्फासालाजिन, थर्ड इज क्लोरोक्विन, फोर्थ इज लेफ्लोनामाइड। दीज आर द नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। नाउ इन बायोलॉजिकल एजेंट सबसे पहले TNF अल्फा इनहिबिटर, जिसमें इटारनिसेप्ट एज वेल एज इन्फ्लेक्सीमैब आएगा, एंड IL-1 फर्स्ट एंटागोनिस्ट में एनाकिंड्रा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। अब हम मीथोट्रेक्सेट के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा DMARDS में DMARDS के अंदर नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आता है, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है। Methotrexate. It is a dihydrofolate reductase inhibitor with potent immunosuppressant and anti-inflammatory properties. So मैंने आपको पहले भी बताया था, मीथोट्रेक्सेट क्या इम्यूनोसप्रेसेंट के अंदर पड़ता है। ये क्या है? नॉन बायोलॉजिकल एजेंट है, जो कि DMARDS के अंदर आता है। So it is a dihydrofolate reductase inhibitor with potent immunosuppressant and anti-inflammatory properties. Methotrexate is now the DMRD of first choice and standard treatment for most patients, including in case of juvenile rheumatoid arthritis. Methotrexate inhibits cytokine production as well as chemotaxis. It also inhibits the function of T cells. So mechanism of action, the anti-inflammatory property is related to inhibition of cytokine production, inhibit करता है T cells को, chemotaxis को, and cell mediated immune reaction. This is the mechanism of action. जो एडवर्स इफेक्ट हमारे मीथोट्रेक्सेट के होंगे, वो होंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ओरल अल्सरेशन एंड GI अपसेट, लीवर डैमेज विथ प्रोलॉन्ग थेरेपी, and incidence of chest infection is increased also in prolonged therapy. Means साइड इफेक्ट लोअर डोज में ओरल अल्सरेशन एंड GI अपसेट होगा। अगर ड्रग यूज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो लीवर डैमेज एंड इंसिडेंस ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। नोट, मीथोट्रेक्सेट इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लीवर डिजीज एंड पेप्टिक अल्सर। इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग, लीवर डिजीज एंड पेप्टिक अल्सर में। Now we come to azithromycin. This purine synthase inhibitor act after getting converted to 6-mercaptopurine by the enzyme thiopurine methyltransferase. ये कब एक्ट करेगा? After being converted to 6-mercaptopurine with the help of enzyme methyltransferase. It also suppresses inflammation. Gives along with corticosteroid. It is given along with corticosteroid. It is not combined with methotrexate. The adverse effect of azithromycin are nausea, diarrhea, vomiting, and oral discomfort. Now, sulfasalazine. It is a compound of sulfapyridine and 5-aminosalicylic acid with anti-inflammatory property and useful in ulcerative colitis. It is a compound of sulfapyridine and 5-aminosalicylic acid with anti-inflammatory property. It is useful in ulcerative colitis. Suppresses the disease in a significant number of rheumatoid arthritis patients. Its mechanism of action, it is an anti-inflammatory action that acts by the suppression of generation of superoxide radicals and cytokine elaboration by inflammatory cell. It acts by the generation of superoxide radicals or free radicals. Adverse effect, neutropenia, thrombocytopenia, as well as hepatitis. Note, sulfasalazine, it is used as a second line drug for mild case or is combined with methotrexate. Sulfasalazine is combined with methotrexate, while azithromycin is not combined with methotrexate. Now chloroquine. These are the anti-malarial drug found to induce re-emission in up to 50% patient of RA but take 3 to 6 months.
chloroquine. It is an anti-malarial drug. Mechanism of action: they have been found to reduce monocyte IL-1 first and inhibit B lymphocyte. It also causes free radical scavenging as well as lysosomal stabilization. Adverse effect: it causes retinal damage, corneal opacity when prolonged use, rashes and graying of hair. It is most important. Irritable bowel syndrome, important adverse effect of chloroquine, as well as myopathy. Now, leflunomide. It is an immunomodulator which inhibits proliferation of stimulated lymphocyte in a patient with active rheumatoid arthritis. What is an leflunomide? Leflunomide is an immunomodulator which inhibits the proliferation of lymphocytes. Now, the mechanism of action of leflunomide is rapidly converted in the body to an active metabolite which inhibit dihydrotate dehydrogenase and pyrimidine synthesis in actively dividing cell and prevent antibody production by B lymphocyte. Adverse effects of leflunomide are diarrhea, headache, nausea, rashes, loss of hair, thrombocytopenia, transaminase, raised hepatic transaminase. Now, biological agents. In biological agents, we have TNF alpha inhibitors, IL-1 antagonists, as well as corticosteroids. TNF alpha inhibitor neutralizes the TNF alpha and inhibits its reaction. It has quick response. IL-1 antagonist inhibit IL-1 first receptor and is less effective than TNF inhibitor. Adverse effect: local reaction and chest infection. Corticosteroid. It is an potent anti-inflammatory and immunosuppressive agent. They do not arrest the rheumatoid arthritis. They are used in low dose because long term has serious disadvantages. That's all about anti-rheumatoid drugs. Thank you.